11 signs that you should not be in the business. देखिए आजकल ना एंटरप्रेन्योरशिप एक बड़ा फैंसी वर्ड हो गया है। सबको बिजनेस शुरू करना है, धंधा शुरू करना है, want to be my own boss. But you need to be very careful as to why you're starting the business or why you are actually in the business. मैंने शुरू किया अपना बिजनेस 2018 में। हर साल हमारा रेवेन्यू डबल हो रहा है। We went from first crore in 2018 to making almost 56 crore in 2022. And this year we're going to cross 80 to 100 crores. This is one of the biggest lessons I can share with you. It's not about what business you start. It's about knowing why you're starting the business. You need to have clarity of the why. And you should also know what are the reasons not to start a business or be in the business. So इस वीडियो के थ्रू hopefully you understand what you should not be doing. Okay? So शुरू करते हैं. Reason number 1. Do not get into the business when you are desperate for money. क्या होता है ना, लगता है कि यार बहुत पैसे चाहिए, बिजनेस में बहुत पैसे हैं, देखो ये भी करोड़पति, वो भी करोड़पति. If you get into business when you really need the money and you're looking to become crorepati desperately, guess what energy you're bringing to the business or the universe? You're bringing desperation is a negative energy, low vibration. And anything you do, whether it's business or a relationship, you start with a low vibration, you cannot go to the next level. So don't start a business with desperation. कि यार मुझे चाहिए. It's against spiritual law and you're going to be struggling in business. Number 2, don't get in the business only for money. देखिए money important है. Yes, it is all important. But what is more important is what can you do for others? How can you serve others? How can you add value to others? Because money in the bank is a direct reflection of value created in the marketplace. तो अगर आपको बहुत पैसा बनाना है तो पैसों को भूल जाओ, बहुत इम्पैक्ट बनाओ ताकि बहुत सारा पैसा बन जाएगा ऑटोमेटिकली. Because moment you focus on money and chasing money, neither you have the money nor you have the fulfillment and happiness. But if you look at impacting lives, not only you'll be able to impact lives, you'll have fulfillment, but you also will have lots of money coming your way. Like मुझे अभी भी याद है जब मैंने बिजनेस शुरू किया, I started because I truly wanted to help people to come out of their mediocre life, mediocre thought process, so that they can find their passion, live a fulfilled life and make money around it. एक चीज़ ये मैंने ध्यान में रख ली और हमेशा यही याद दिलाता अपने आप को, क्यों कर रहा हूँ मैं बिजनेस? Why am I doing this? And I kept focusing on that and money just followed. Number 3, don't get into business just to escape 9 to 5. I know ये बड़ा contradict sound कर रहा होगा कि हम मैसेजिंग यही करते हैं, quit 9 to 5, build the business on our passion, quit 9 to 5, build the business on our passion. पर यार, don't get out of the job because you hate it. Get into something because you love it the most. समझ रहे हो? बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यार escaping 9 to 5 because I don't like it, so that क्या ऑप्शन है मेरे पास? No. You are actually finding something that you love and you love that so much कि this job does not give you satisfaction and fulfillment anymore. You see, जब मैं जॉब में था, मैं अच्छा था, हैप्पी था, फ्रस्ट्रेटेड नहीं था. बहुत ज़्यादा भी इतना एलिवेटेड और खुश नहीं था, but frustrated नहीं था. I was happy with what I was doing. I was making money and all that. But beyond a certain point, वो satisfaction नहीं मिल रहा था. So I did not quit my job because I hated the job. I quit the job because I loved helping people, coaching people, training people more than selling product or services. That is a big difference. Number 4, don't get into business if you lack the courage to face challenges or problems. देखिए, धंधे में ना बहुत उतार चढ़ाव आता है. कभी प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, मार्केटिंग कैंपेन फेल हो जाएगी, एड्स नहीं चलेंगे, क्लाइंट्स नहीं होंगे आपके साथ, टीम में टेंशन होगा, हजारों तरह के तमाशे और नाटक होते हैं बिजनेस में. पर अगर आप courageous नहीं है, if you're not courageous to face those challenges and stand for what is right, तो ये this is not for the weak-hearted people, people who don't have the guts, right? मुझे अभी भी याद है कितने उतार चढ़ाव है यार. बिजनेस गया 1 करोड़, 2 करोड़, फिर वापस 0 पे चला गया मेरा बैंक बैलेंस, राइट? टैक्सेस का पता नहीं था, टीम में क्लैशेस हुए, टीम को कैसे मोटिवेट करूँ, कैसे मैं क्लैशेस सॉल्व करूँ, राइट? मार्केटिंग कैंपेन फ्लॉप हो रही थी बहुत बार, वर्कशॉप नहीं चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नाटक होते हैं. बट एवरी टाइम दिस हैपेंस, आई रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ व्हाई एम आई डूइंग दिस, एंड यू विल बिकम वेरी करेजियस इफ you're not focusing on just my money, my house, my car. When you're looking to serve people, when you become selfless,
you automatically become courageous because life becomes limitless. So focus on your why and serving people. Courage अपने आप आ जाएगा. But उसके बाद भी courage नहीं है तो धंधा मत करना. Go back to your safety net. Work with somebody. उसमें भी कोई गलत नहीं है. Work with somebody and contribute to mission or impact lives through that. Because हर कोई रिस्क इतना ले नहीं सकता, हर कोई इतना बड़ा टेंशन ले नहीं सकता. Which is okay, right? Entrepreneur बनने के लिए ना अलग ही लेवल का courage चाहिए. Number 5, don't get into the business because others want you to. क्या होता है ना, हमारे दोस्त बोलते हैं यार तू धंधा कर लेना, राइट? फैमिली बोलती है बिजनेस शुरू कर, राइट? बहुत फैमिली बोलती है बिजनेस मत कर. कुछ फैमिली बोलती है बिजनेस शुरू कर, तू उसमें ना बहुत आगे जाएगा, तू उसमें बहुत आगे जाएगी. Do not listen to other people, right? If you're starting the business focusing on external things or shiny object or a great opportunity है, कर ले यार कर ले, दूसरे बोल रहे हैं और आप एक्साइट होके कर लो, सफल नहीं हो पाओगे. Because business ideas, it should be coming from inside, from within, not from outside. Yes, you need external validation. Once you have the idea, then you need brains to market it, sell it, close it and all that. वो external आएगा, but शुरुआत अंदर से होनी चाहिए, right? It's like start from your heart, then bring your brains into it. A lot of people, they don't use the heart or soul because they love it. They use their brains because oh अच्छा idea है, and then they regret. So don't look at others. Like think about this, right? Today I say, अरे इससे शादी कर ले यार, इससे शादी कर ले, अच्छा है, अच्छी लड़की है. अंदर से आ रहा है क्या वो फीलिंग? है क्या? प्यार है क्या? नहीं है तो क्यों? बिजनेस भी तो ऐसा ही है. एक बार शुरू कर लिया, बिजनेस बंद करना भी मुश्किल हो जाता है. जैसे एक बार शादी हो गई, डिवोर्स बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो चूज योर बिजनेस ऑल्सो इन अ राइट वे. नंबर 6, डू नॉट गेट इनटू द बिजनेस विदाउट ए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. अब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है? देखो बहुत बार क्या लगता है ना, हम बिजनेसमैन जब शुरू करने जाते हैं ना, हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं. ये आइडिया, ये प्रोडक्ट, ये सर्विस धमाका मच जाएगा, राइट? वो धमाका बाहर नहीं मचता है, धमाका दिमाग में और लाइफ में मच जाता है जब कोई वो प्रोडक्ट और सर्विस नहीं खरीदता है और आइडिया पता चलती है एकदम बेकार फुद्दू आइडिया थी. तो बिफोर यू गेट इनटू द बिजनेस फुल टाइम, यू नीड टू डू सम टेस्टिंग. जैसे सॉफ्टवेयर होता है, राइट? बिना टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर आ जाता है बाहर? नहीं ना. सेम वे बिजनेस आइडियाज जो होती हैं, प्रोडक्ट जो बनाते हो आप, यू नीड टू लर्न टू टेस्ट इट. और कैसे टेस्ट करोगे? किसी को दे दोगे यूज करने? ऐसे नहीं. You need to test it in a way that are people actually buying it, right? बड़ी अच्छा किस्सा और जोक मुझे याद आ रहा है. एक इंसान जाता है अपने दोस्त के पास, यार ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा सर्विस है, क्या लगता है? बोलता है बहुत ज़बरदस्त है, जा यार बहुत अच्छा करेगा, राइट? वो अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बना लेता है. मैं बोलता है यार खरीदना तू. बोला नहीं मैं क्यों खरीदूँ, दूसरों को बेच. दे सेइंग इट्स अ गुड थिंग. जबान से हर कोई अच्छा बोलेगा. Until unless they don't pull the money out from their wallet and give you the money and take the product, this is not a proof of concept, and that's a red signal. Do not start your business until you get a proof of concept. मुझे अभी भी याद है, मैं अपने जब बिजनेस शुरू करने से पहले, मैं जब जॉब में था, parallelly I started selling few things here and there, and because I was able to make money, my confidence went up. यार इसमें डिमांड है, I'm also good at this, and then I went little bigger, and then point came, मुझे full confidence आ गया because I had 2-3 proof of concept and I made 1.6 lakh rupees. I said now it's the right time. लोग पैसा दे रहे हैं, I'm able to close people. Let me go full time into this business. That is how important proof of concept is. Number 7, do not get into the business until you have tested that you're solving real life problem. देखो क्या होता है ना, बिजनेस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. बिजनेस एक सेवा है. बहुत लोग समझ नहीं पाते. दे थिंक बिजनेस इज जस्ट अ व्हीकल टू मेक मनी एंड बिकम देयर ओन बॉस. नो. इन रियलिटी बिजनेस एक सेवा है. You become successful in business only when you're solving problems and problem for others. And bigger the problem, bigger the money, right? So if your business, your product or service is not solving real life problems, that means they are not big enough. Today, अब आपको business शुरू करना है. मान लीजिए आप grocery shop शुरू करते हैं. Are you solving a problem? Yes. But is it a big problem? Maybe not, because आपके आसपास में इतने सारे grocery shop हैं. अगर कोई ग्रोसरी शॉप नहीं आप शुरू कर रहे हैं, probably it's a bigger problem, but eventually बहुत सारे यहाँ आ जाएंगे competition, right? So do not get into business, right, where it is not solving a real life problem. In coaching and mentoring, when we are helping people to find their passion, convert that into business, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है. उसको डॉक्टर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ट्रेडिशनल एजुकेशन सॉल्व नहीं कर पाइए, हम सॉल्व करते हैं. एंड दिस इज द रीजन व्हाई
we are generating crores because we're helping others become crorepati's as well. So we're solving real life problems, not only from money, we're helping people to change their mindset, their belief system, their physical energy, their relationship, and of course their finances. So holistic transformation होता है, पूरी life change होती है उसकी. And this is the reason why our company is also growing. So it's time for you to check if this is the idea which is going to solve real life problem or not. Number 8, do not get into business because you think entrepreneurship or business is cool, right? क्या होता है ना, शार्क टैंक एक वेव लेके आया है हमारे इंडिया में. हर कोई घर घर में बच्चा बिजनेसमैन बनूंगा. Like I asked one person, what are you passionate about? Oh, I'm passionate about business. I'm like, you cannot be passionate about business. Be passionate about solving a problem in the marketplace, helping people. Entrepreneurship is a tool. Don't fall in love with the tool. Fall in love with the cause. What are you doing with this tool? You understand? It's like, oh, I'm in love with bansuri. No, don't fall in love with bansuri. Fall in love with the music that you're producing with help of the tool, which is helping other people feeling happy listening to the music. Business is a tool, so don't fall in love with entrepreneurship. In fact, there's nothing cool about entrepreneurship. बहुत दर्द है, बहुत pain है, right? बहुत hot है entrepreneurship. Cool नहीं है, right? But what is cool is the satisfaction that you get at the end of the day when you're making a difference, helping people, solving problems. वो feeling बहुत cool है, समझे? Number 9, do not get into the business and become a self-employed entrepreneur. देखिए, अलग अलग लेवल के हमारे करियर ऑप्शंस होते हैं. एम्प्लॉय होता है, फ्रीलांसर होता है, सोलोप्रेन्योर होता है, पैशनप्रेन्योर होता है और एम्पायर बिल्डर होता है. अगर आप एम्प्लॉय हैं तो हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है. फ्रीलांसर हो बट यू आर जस्ट अ सोलो एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, आपकी ज़िंदगी कुछ अलग नहीं है एम्प्लॉय से, ठीक है. थोड़ा सा लिबर्टी है बट यू स्टिल एन एम्प्लॉय. इफ़ यू आर अ सोलोप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर, तो भी आपकी लाइफ कोई डिफरेंट नहीं है. यू स्टिल ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी. इससे ज़्यादा जॉब ही कर लेते हैं बिकॉज इतना सारा रिस्क है, इतना प्रेशर है, सब कुछ आप ही कर रहे हो, तो क्या मतलब है इस बिजनेस का. You need to learn how the real business actually works. For this, you need system, people, process. You need to learn to leverage all that. And best word in business is leverage. You need to leverage all that so you actually become a real entrepreneur. So that you can take vacation when you want, travel where you want, you have choices, you can make a difference. So don't become a self-employed entrepreneur. आज मैं अपना business में I can travel anywhere, work from anywhere for 30 days, 40 days, 50 days. My business will go on the same way because I am not a self-employed entrepreneur. I don't work in the business. I work on the business. Business does not run my life. I run the business. You understand? That is how you can do it. And please don't come back and give me excuse. पर मेरे business में ऐसा नहीं होता है. हर किसी के business में ऐसा होता है. करना आना चाहिए आपको. समझ रहे हो? Number 10. Do not get into the business with only your mind. देखो क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं दिमाग बहुत चाहिए बिजनेस के लिए, आइडियाज बहुत चाहिए, स्ट्रैटेजीज बहुत चाहिए. यस, पर ये गुरु मंत्र लिख लो, धंधा दिल से शुरू करना है. समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, वहां से शुरुआत करो. वरना क्या होगा, when things become tough, either you'll give up or you'll say, oh man, I'm just an employee. You will get frustrated. अगर आप पैशनेट हो गए तो कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, अप्स एंड डाउन्स होगा. बिकॉज यू पैशनेट अबाउट इट, यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम. ये तो स्टीव जॉब्स ने भी कहा है, डू व्हाट यू लव, बिकॉज व्हेन थिंग्स बिकम्स डिफिकल्ट, व्हिच इट विल, यू विल नॉट गिव अप, यू विल फाइंड द सॉल्यूशन. सो धंधा दिल से शुरू करो, दिमाग भी यूज करो, बट दिमाग कम्स सेकेंड, पहले कम्स हार्ट. मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट फ्रॉम माइंड एंड दे फॉरगेट टू यूज द हार्ट एट ऑल और लिटिल बिट ऑफ हार्ट. दैट्स नॉट हाउ यू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, राइट? You become just a small time entrepreneur and self-employed entrepreneur if you're just using your brains. और आखिरी, do not get in the business if you are looking for quick results. देखिए, बिजनेस ना 2 मिनट का मैगी नहीं है. आपको लगता है 2 मिनट में, 2 महीने में मैं मिलियनेयर बन जाऊंगा, करोड़पति. नहीं होता ऐसा. एवरीथिंग इज अ प्रोसेस. आप इस दुनिया में आए, आपको भी तो महीनों लग गए ना. देन यू टुक बर्थ, हमको भी महीनों लग गए, राइट? किसी का शॉर्टकट था क्या? 2 महीने, 3 महीने? नहीं. We all have to go through the right process. Same thing, business is also your baby. It has to go through a cycle, it has to go through the process. And if you do not have patience, if you cannot wait, be aggressive in terms of action, but if you do not have patience, do not get into business because you will be miserable. You understand? ये हैं 11 reasons because of which if you have any of these, then don't get into business, don't start a business, don't be in the business. ठीक है?
Now, if you really enjoyed all this and if you want to start a business or if you want to grow your business, क्या करना चाहिए उसके लिए भी process है. बहुत लोगों को लगता है ना, business hard, business difficult. No, it's not. If you follow the process, it's not. Otherwise, it is. क्या process है? Click the link, join the webinar where I share with you more details, more insight all about how do you build the business on our passion and become first generation, crorepati first generation millionaire. This is Dave Gadri. Don't be ordinary, be legendary.